के बारे में भी कोई अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है सर। Sir, there is a shortage of workforce shortage in the Indian Railways. Indian Railways currently suffering of shortfall within 1,05,000 vacancies, particularly in the roles of critical to safety such as signaling, telecommunication and track maintenance. At the same time, there are approximately 70,000 posts in safety related to department remaining vacant, including a high-risk zones like South Eastern Railways. There are nearly 20,000 vacancies for loco pilots and assistants loco pilots. However, recruitment for only 18,799 vacancies was notified by the government. The lack of human resources has contributed to increase inefficiency related to error by railway personnel in the critical zones, as they have to work in extended shifts to compensate for the shortage of the staff. And hence, training programs are also essential for improving safety and operational essential. The current system fails to address these human factors comprehensively, reflecting a system of disagreed of railway safety. सर, मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा प्रैक्टिस है, 90 इयर्स का जो प्रैक्टिस चल रहा था उसको तो आपने रद्द कर दिया है, लेकिन एक और परंपरा हम लोग इंडियन रेलवेज के अंदर देखते हैं। जब भी इस तरह के कोई बड़े घटना घटते हैं तो हमेशा जो भी रेल मंत्री होते हैं उस समय के रेल मंत्री वो इस्तीफा देते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि कम से कम वो परंपरा तो नहीं है, कम से कम ये परंपरा को तो आप बरकरार रखेंगे बोल के मैं बात को रखते हुए समाप्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सदस्य। सुश्री डोला सेन जी। Thank you, Vice Chairman Madam, for giving me chance to speak. Thanks and deep regards to my party, All India Trinamool Congress, and our leader, Honorable Mamata Banerjee ji, to give me opportunity to speak on Indian Railways. I will try to speak in my mother language, Bangla. In fact, India and we the people of India will always remember the long tradition of Indian Railways, the lifeline of our country and of our 140 crore population. আমরা গর্বের সাথে মনে রাখি আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরী জি, লালু প্রসাদ যাদব জি, মল্লিকার্জুন খারগে জি সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেলমন্ত্রীর ভূমিকার কথা। আর অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রিত্বের অসামান্য সময়কেও আমরা মনে রেখেছি। এখনকার সময়ে রেলের সেই ঐতিহ্য যে তলানিতে, তার সবচেয়ে বড় কারণ রেলের মতো লাইফলাইনকে बेसरकारी करार दिके एगिए निए जावा। रेल को प्राइवेटाइज करने का ये इरादा ही रेल को आज का दुखद दिन देखना पड़ता है। और प्रधानत এই জন্যই 2017 থেকে মোদি বাবুর জমানায় রেল বাজেট বন্ধ, আলাদা করে আর রেল বাজেট নেই, বাজেट বরাদ্দ নেই, ग्रांट्स नहीं। और इसीलिए ही इस साल जनरल बजट पढ़ते वक्त हम लोग रेल का नाम सिर्फ 3 बार सुना है। रेल की सुरक्षा, रेल सेफ्टी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। কে ছিলেন সেই রেলমন্ত্রী যিনি রেলকে আত্মনির্ভর করার জন্য রেভিনিউ আর্নিং এর দিকে নজর দিয়েছিলেন? তাও আমাদের গরিব দেশে টিকিটের দাম না বাড়িয়ে ফ্রেট পলিসি ডিক্লেয়ার করে সম্মানীয় মমতা ব্যানার্জি। যখন মোদি বাবুরা প্রতি কিলোমিটারে 200 কোটি টাকা খরচ করে বুলেট ট্রেনের গল্প দেন, তখন কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তৈরি করেছিলেন, যেখানে প্রতি কিলোমিটারে মাত্র 25 কোটি টাকা ব্যয় করে চাল, ডাল, সবজি, তেল, দুধ সহ সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের গরিব দেশের পিছিয়ে পড়া উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশে কোনটা জরুরি ম্যাডাম, কোনটা বেশি জরুরি? थर्ड वर्ल्ड कंट्री में प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? কে করেছেন সেই কাজ? বিরল ব্যতিক্রমী মমতা ব্যানার্জি। যদিও বুলেট ট্রেন হোক, উই হ্যাভ নো অবজেকশন অ্যাট অল।
সব মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি আমাদের গরিব দেশের উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া যাতে মাথা উঁচু করে সিনা টান করে রেলে যাতায়াত করতে পারেন তাই 25 টাকার ইজ্জত মান্থলি বানাতে পেরেছিলেন দেশের মানুষকে মর্যাদা দিয়ে? জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি দেশের ইতিহাসে প্রথমবার ননস্টপ রেল পরিষেবা দুরন্ত এক্সপ্রেস চালু করেছিলেন, যেখানে এসি নন এসি দুই পরিষেবাই আছে, সমাজের সব স্তরের মানুষ ওই দ্রুততম দুরন্ত এক্সপ্রেসের সুবিধা নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে? গতির শিখরে থাকা আমাদের প্রিয় মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি রুগ্ন হয়ে যাওয়া রেলের ওয়াগন কারখানা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড ব্রেথওয়েটকে অধিগ্রহণ করতে পারেন? রেলের ওয়াগন তৈরির পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং পিএসইউ যেসবকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন? গঠনমূলক প্রশাসক, কনস্ট্রাকটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মমতা ব্যানার্জি। যেখানে উল্টো দিকে বেসরকারীকরণের চক্করে মোদিবাবুরা রেলের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস প্রচুর লাভজনক সিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে প্রফিটেবল সিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে লিলুয়া কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপকে বিলগ্নীকরণের পথে নিয়ে গিয়ে অতি লাভজনক শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে? কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি গ্রুপ ডি রেল কর্মীরাও যাতে বছরে একবার পরিবার নিয়ে বেড়াতে যেতে পারেন তার জন্য ফ্রি পাসের ব্যবস্থা করেছিলেন? বলতে পারেন কে কাজ করতে পারেন? তিনি মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি 2009তেই ভিশন ডকুমেন্ট 2022 রেডি করেছিলেন লাইফলাইন রেলের জন্য? আইআইটি খড়গপুরের সাথে রেলের রিসার্চের জন্য চুক্তি করেছিলেন? গঙ্গা নদীর নিচ দিয়েও যে মেট্রো রেল যেতে পারে সেই স্বপ্ন দেশবাসীকে দেখাতে পেরেছিলেন? এই অ্যাডভান্স মডার্ন আইডিয়া দেশের কাছে রাখতে পেরেছিলেন? তার জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি কলকাতা মেট্রোকে রেলের 17th জোন বলে ঘোষণা করে কলকাতা মেট্রোকে সম্পূর্ণ সরকারি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন? কলকাতা ছাড়া বাকি সব মেট্রোপলিটন শহরে বেসরকারি মেট্রোর কারিগর মোদিবাবুরা যা কল্পনাও করতে পারেন না। জাতীয়তাবাদী নেত্রী ন্যাশনালিস্ট লিডার ममता बनर्जी। मुश्किल का बात यह है कि मोदी जी का करेंट ब्यूरोक्रेट रेल मंत्री जी इतना कुछ जानते नहीं, क्योंकि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम जब ये सब हमारे दीदी ने किया तब ये ऑनरेबल मंत्री जी आइदर वॉन्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ते थे, नहीं तो कोई कंट्रोवर्शियल कंपनी एडलर इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे थे। और इसीलिए इस मंडे को ये रेल मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बट इन्होंने डिमांड किया नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट को भी रेलवे के लिए थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स दिया गया, लेकिन सदन में असत्य भाषण देना गैर कानूनी है मैडम। I will try to share with you some figures. Simple arithmetic, madam. Under the UPA, Kerala received 1.43% of the funds given by the Parliament for railways, which has dropped to 1.17% under the NDA. Under the UPA, Tamil Nadu received 3.38% of the funds given by the Parliament for railways, which has now dropped to 2.59% under the NDA. West Bengal received 16.85% of the funds given by the Parliament for railways under the UPA, which has now dropped to 5.46% only under the NDA. সম্মানীয় রেল মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই, আমার দেওয়া তথ্য ভুল প্রমাণ করতে হলে একটু অথেন্টিকেটেড করবেন স্যার, প্লিজ একটু অথেন্টিকেট করবেন। শুধু ভাষণ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আইওয়াশ আর জুমলায় চলবে কি করে? অমৃত ভাষণ স্টেশন স্কিমে 135টা স্টেশনের মধ্যে একটাতেও কাজ শুরু তো দূরের কথা, কাজ করার জন্য টেন্ডার প্রসেসও চালু হয়নি। 453টি 2024-25 আপগ্রেডেশনের টার্গেট থাকলেও মাত্র একটি স্টেশনকে আপগ্রেড করার কাজ শুরু হয়েছে। লজ্জা লজ্জা। फिर भी मंत्री जी का इतना एरोगेंस, जरा सा भी शर्म नहीं होता जी। शेम ऑन देम। सेफ्टी कहां से आएगा? लोको पायलटरा, हम सिर्फ थोड़ा उदाहरण देंगे। लोको पायलटरा ना घुमिए एकटाना 36 घंटा ডিউটি করতে বাধ্য হন। তাদের জীবন শুধু নয়, হাজার লক্ষ কোটি সাধারণ নিত্যযাত্রীর জীবনও বিপন্ন।
মহিলা লোকো পাইলটদের ন্যূনতম অধিকারের কথা বাদই দিলাম, কারণ পাইলটের কেবিনেট থেকে তারা ওয়াশরুমে যাওয়ার সুযোগটুকুও পান না। 58,000 গ্রুপ সি ভ্যাকেন্সি আছে বলে গত বছরই রেল মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, যাদের মধ্যে 4 ভাগের 3 ভাগই সেফটি সুরক্ষা ক্যাটাগরিতে কাজ করার কথা। সেম সেম। কাস্টমার অ্যামিনিটিস, প্যাসেঞ্জার অ্যামিনিটিসে 22% বাজেট কাট, 15,500 কোটি টাকা থেকে কমে 12,000 কোটি টাকা মাত্র হয়েছে। তাহলে পরিষ্কার বেডরোল, টয়লেট, স্বচ্ছ রেল কামরা, রেল স্টেশন মানুষ পাবেন কি করে? Railway has failed to generate internal revenue even. Railway net earnings also have remained marginal in 22-23, 23-24. For the current financial year, budget estimate was revised. Budget estimate was revised downward by 52%. দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বিশ্বগুরু মহাগুরুরা দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বিশ্বগুরু মহাগুরুরা দিনে 5-6 বার পোশাক পরিবর্তন করেন, আর তাদের রেলমন্ত্রীরা বারবার কথার খেলাপ করেন, ডেডলাইন টাইমলাইন প্রতিশ্রুতি চেঞ্জ করেন। এটা কি ভালো? ছি ছি। মোদ্দা কথা, রেলের রেভিনিউ বাড়াতে হবে। রেভিনিউ বাড়িয়ে রেলকে আত্মনির্ভর করতে গেলে বেসরকারীকরণও সমাধান নয়, প্ল্যাটফর্ম টিকিট থেকে রেলের টিকিটের দাম বাড়ানোও সমাধান নয়। ফ্রেট পলিসির উপর জোর দিন। Eastern Dedicated Freight Corridor EDFC is one of the largest infrastructure projects from Ludhiana in Punjab to Dankuni in West Bengal that stretches about 1839 kilometers, announced by the then erstwhile Rail Minister Mamata Banerjee ji. পাঞ্জাব থেকে শুরু করে প্রথম 2টি সেগমেন্টের কাজ সম্পূর্ণ হলেও আজ 12 বছর ধরে শেষ ও তৃতীয় সেগমেন্টের কাজ বন্ধ আছে, যা কিনা বিহারের সোননগর থেকে বাংলার ডানকুনি পর্যন্ত। যদিও এক্ষেত্রে জমির কোনো সমস্যা নেই। নীরজ, ধীরজ রাখ ইয়ার, নীরজ। রেলের কাছে জমির কোনো সমস্যা নেই, রেলের কাছে জমি আছে। এটি ফেলে না রেখে সম্পূর্ণ করলে দেশের মানুষের উপকার হতো, রেলের উপকার হতো, রেভিনিউ বাড়তো, কিন্তু করছেন না। বেসরকারীকরণের চক্করে হকার উচ্ছেদ করছেন। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সেলফ এমপ্লয়েড আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার ওই হকার বন্ধুদের বেরোজগার করছেন। শুধু তাই নয়, সব স্টেশনে যেরকম বড় বড় কর্পোরেট স্টাইলে কায়দার দামি দোকান বসাচ্ছেন, তাতে কি আপনার রেভিনিউ বাড়বে? কোটি কোটি রেল যাত্রীর মধ্যে 80-90 ভাগই তো গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ। তারা এত দামি জিনিস কিনতে পারে নাকি রোজ রোজ? রেলের ঠিকা কর্মীদের ক্ষেত্রে জেম পোর্টালের বাহানায় 25-30 বছরের চাকরি থেকে বসিয়ে দিচ্ছেন বেআইনিভাবে। তাদের সেন্ট্রাল মিনিমাম ওয়েজ বন্ধ রেখেছেন, পিএফ ইএসআই গ্র্যাচুইটি বোনাস বন্ধ করছেন বেআইনিভাবে। রেলের রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য অ্যারোগ্যান্স ভুলে, ঘামন্ড ভুলে মমতা ব্যানার্জি পলিসিগুলো অ্যাভেল করুন, আপনাদেরই ভালো হবে। রেলের অব্যবহৃত জমি, এয়ার স্পেসকে কমার্শিয়ালি ব্যবহার করা, যাতে অ্যাসেটকে দিয়ে লায়াবিলিটি ওভারকাম করা যায়। সারা দেশে বিশেষ বিশেষ টুরিস্ট স্পটের জন্য, তীর্থক্ষেত্রের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং ও ট্যুরিজম কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ রেল পরিষেবা ও প্যাকেজের পরিকল্পনা করলেও রেভিনিউ বাড়বে। আত্মনির্ভরতার দিকে এগোবে রেল। রেলের রুটে, রেলের ট্র্যাক বরাবর অপটিক ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক বসিয়ে তাকে কমার্শিয়ালি ইউটিলাইজ করা দরকার, এতে রেভিনিউ বাড়বে। আবার আইটিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাবে রিমোট এরিয়াতে। রেলের মাধ্যমে পোর্ট কানেক্টিভিটিকে যুক্ত করা যাবে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বাংলায় সমুদ্র বন্দরগুলি যে আছে তাদেরকে রেলের মাধ্যমে যুক্ত করলে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্য রপ্তানিতে দিগন্ত খুলে যাবে, রেভিনিউ আর্নিংও হবে রেলের। আই রিপিট मैडम, আবার বলছি, प्लीज एरोगेंस के साइड में रख के ममता बनर्जी जी का ये सब तरीका को अपनाइए। घमंड हटा के ये सब मेजर्स लेने में रेवेन्यू अर्निंग बढ़ेगा, रेल का फायदा होगा, रेल आत्मनिर्भर होगा। प्लीज সম্মানীয় রেলমন্ত্রী মহাশয়, আপনার অ্যারোগেন্সকে কমান, ভুল হলে স্বীকার করুন। অহংকারী স্টাইলে ডেডলাইনের ঘোষণা করছেন, বাস্তবে করতে পারছেন না। এমন প্রচার আর আইওয়াস আর জুম লাইন না থেকে কাজে করে দেখান, তারপর কথা বলুন। সদ্য প্রয়াত গণকবি ম্যাডাম, এক মিনিট ম্যাডাম প্লিজ। গণকবি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি লাইন বলতে চাই, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কোথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। আপনার প্রেডিসিসর সিনিয়র সব রেলমন্ত্রীদের ফলো করুন, তাদের থেকে শিখুন, রেলের রেভিনিউ বাড়ান, রেলকে আত্মনির্ভর করুন, রেলকে দেশের প্রকৃত লাইফলাইন হিসেবে গড়ে তুলুন।
প্রায় 12-13 বছর ধরে পার্লামেন্টে অনেক আলোচনা বিতর্ক আমার এই 3টে টার্মে আমি শুনছি। এমন অ্যাটিটিউড আজকাল দেখছি ট্রেজারি বেঞ্চের, এটা ঠিক না, একে আমি কন্ডেম করতে চাই। বাংলায় জিততে চান, আসুন পলিটিক্যালি জিতুন, মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে লড়ে কমপ্লিট করে জিতুন, ফেয়ার ডিল। কিন্তু ভোটার লিস্টে কারচুপি করে দিল্লি মহারাষ্ট্রের মতো ভোটার বাড়িয়ে পাওনা টাকা হকের করি আটকে রাখবেন, প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা ন্যায্য ডিউ বাকি রাখবেন, লোকের পরিশ্রমের স্যালারি ওয়েজ দেবেন না, আর সশনে দাঁড়িয়ে পার্লামেন্টে এসে বাংলাকে ডিফেম করতে অসত্য বলবেন, এটা ঠিক না। নির্মলা সীতারামন জি থেকে অন্নপূর্ণা ম্যাডাম, ধর্মেন্দ্র প্রধান জি থেকে ম্যাডাম প্লিজ, অশ্বিনী বৈষ্ণব জি, সবাই সদনকে ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছেন বাংলা সম্পর্কে, অসত্য বলছেন, অথেন্টিকেট করছেন না। আমাদের কাছে ডকুমেন্ট আছে, সব প্রতিটা সত্য সঠিক ইনফরমেশনের কাগজ আছে। সবচেয়ে বড় কথা, সব বিভাগে বাংলা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের থেকে ফার্স্ট প্রাইজ পায় কি করে ম্যাডাম? ফার্স্ট প্রাইজ দিচ্ছে আর মিথ্যে কথা বলছে, অসত্য কথা বলছে। ভুলে যাবেন না ম্যাডাম, হোগে এক সেকেন্ড, ভুলে যাবেন না এই অ্যারোগেন্স আর জুমলাই আপনাদের 303 থেকে 240 করেছে। এমন চললে এরপর 200 নিচে চলে। मैं अगले वक्ता को बुला रही हूँ। इंडिया আপনাকে Honorable Vice Chairman. धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज, उनका टाइम शुरू हो गया है, प्लीज। Honorable Vice Chairman, thank you for the opportunity given to speak on the working of the Ministry of Railways. I would like to address my speech on 7 major heads. The railway projects are very important for the economic development of the state of Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu is for a very long time urging the union government to give and release funds and to expedite 4 or 5 projects. I request the ministry to sanction and give high priority to these projects. 4th line between Tambaram and Chengalpattu, Tirupattur Krishnagiri Hosur new line, Madurai Toothukudi via Arupukottai about 143 kilometers, Minjur Tiruvallur Sri Perumbadur Varagadam project. This project connects the ports and industrial clusters around Chennai. Semi-high speed corridor. The corridor can connect Chennai, Salem, Coimbatore with extensions like Salem, Hosur, Bangalore and Coimbatore and Ernakulam. Out of 10 new line projects, only 24 kilometers has been commissioned against 872 kilometers. As for gauge conversion in 3 projects, 604 kilometers has been commissioned out of 748 kilometers. As far as 9 doubling and multi-tracking projects, only 37 kilometers has been commissioned out of 967 kilometers. The reason assigned are land acquisition, forest clearance and the contribution by the Tamil Nadu government. But as far as the union ministry is concerned, the same replies comes year after year, and whether it is a railway budget allocation or budget allocation or the language policy, the union government always treating the state of Tamil Nadu with a stepmotherly attitude. Because the people of Tamil Nadu have not chosen to vote BJP, the union government shall not adopt this attitude. Our patriotism is no less than anybody else. Our contribution to the tax, union tax, is no less than anybody. But in releasing the funds to the state of Tamil Nadu, whether it is railway projects, education or health, the union government is adopting a draconian path. Madam, we respectfully remind the union government that we are merely requesting our rightful share. Please understand that withholding what is justly for ours cannot intimidate us. Beyond the universal biological structures of DNA and RNA, we possess a third vital code, an ideological structure, and that is CNA. CNA stands for CN Annadurai. CN Annadurai represents our cultural and political heritage that guides our determination and resilience in the face of adversity.
Please read what Perarinja Ranna spoke in this August House 60 years ago. We are still fighting what he fought for 60 years ago. The reasons remain the same till now. So I request the union government, the railway ministry, to immediately execute the projects what I have listed. The second major issue of the railways is privatization. After BJP government came to power in 2015, when Niti Aayog proposed 2-decade vision to privatize major segments of India's extensive railway network. Since then, this BJP government has implemented various privatization measures through multiple approaches. Workforce restructuring, contractualization and outsourcing have dramatically reduced the workforce from approximately 3.5 million workers to around 1 million. You have reduced 2 million employment in railway. Corporatization is another issue. Production units are being corporatized, with operations like ticketing, catering are now managed by IRCTC, another company, and slowly it can be given in a platter to any other private company. Station redevelopment. The government has targeted approximately 400 stations for privatization under the banner of redevelopment to match global standards, though progress has been limited. Private train operations. Select trains like Tejas have been handed over to private operators, with the plans to gradually transition railway tracks to corporate management. The case of integral coach factories is still worse. The integral coach factory in Chennai presents a particularly concerning example of this privatization. Despite being one of India's most successful production unit and the indigenous manufacture of Vande Bharat trains, ICF is now being marginalized in favor of multinational corporations. ICF produced Vande Bharat trains at a cost of only 70 crore per train, while the international market price is estimated at the rate of 200 crores. Yet the government has awarded contracts to MNCs at the rate of 120 crore per train, which is 50 crore more than ICF's production cost. Recent agreements of Indian Railways entered with TRSL, an Italian company, in collaboration with Bell, and TMH, a Russian company, in collaboration with Railway Vikas Nigam Limited, are cause of concern. Madam, beyond the higher level of contract values, these private companies receive extraordinary additional benefits. Free infrastructure, government land, utilities like power, gas, water, and existing facilities are provided to them from ICF facility without any cost. 2. Intellectual property transfer. Madam, when we are searching for so many intellectual properties and technical know-how from international companies, these companies, private companies, are given the technical know-how and the knowledge of making these Vande Bharat trains given to these private companies free of cost. ICF infrastructures in Chennai were transferred to TRSL, while MRCF in Latur given to TMH company. The union government justifies this only on the ground of shortage of manpower. I'll give only one example. Management justifies this privatization by saying that manufacturing of 116-car Vande Bharat rack requires approximately 227 Group C employees. Number one, 182 direct technicians, 27 supporting staff, 18 technical supervisors. Currently, 22.2% of technical positions and 600 helper positions remain vacant in ICF. When there is lot of employment is there, when lot of unemployed youth is in this country, instead of filling these vacancies, showing that as a reason, you are giving this
Vande Bharat trains on a platter with free of cost to the multinational companies. This privatization is not only affecting the Indian Railway, but the people of India at large. So Indian Railways have to concentrate on making the employments rather than privatizing these railways. The privatization of Indian Railways will significantly impact railway fares and accessibility. Railways have traditionally served an affordable transportation for Indians economically disadvantaged people. Premium train services lead to increased fares, transforming public transport into a service primarily for privileged segments. International examples from China and Japan show that the train transport system requires more subsidization to support broader economic development. Converting public transport into profit-driven industry not only makes travel unaffordable for millions, but also hampers national economic growth and development. Then I'll come to the monetization, the asset monetization. Sir, some time ago, Times of India reported that a core group of asset monetization of the Union government planned to monetize assets of the railways to an extent of 1.7 lakh crore. When the railway board chairman represented that he could not achieve more than 30% and requested to reduce 1.7 lakh crore to 1 lakh crore, the group said, no, it is not allowed. You have to monetize 1.7 lakh crore worth of properties. That means the freight sites, freight terminals, railway colonies, railway grounds, everything is going to be monetized. This will hamper the growth of railways. Ultimately, the people of India will be put in a very disadvantageous position. This monetization, we have to learn from British Railways. In 1990s, British Railways was monetized, fragmented into several companies. Now, UK government realized its mistake and has passed a new law saying that every railway project will come under the government's position. So, we have to take a lesson from British Railways model. The train accidents are another cause of concern. My friend was speaking about what has happened earlier when the train accidents used to happen. Great leaders like Lal Bahadur Shastri resigned immediately. We don't expect such a highest standard of morality, moral standards now. We don't expect the minister to resign, but at least a convincing answers to be given to the public. That is absent totally. Madam, in the past 3 or 4 years, we have lost a valuable lives of 400 passengers due to train accidents, comparing to 0 deaths between 2018 and 2021. Why this is happening? This is happening because, again, privatization of the employees. You are giving the line maintenance, the infrastructure maintenance, signaling everything to contractors. The contractors again subcontract, giving it to subcontractor. Third tier of subcontractor is coming. The employees under those subcontractors do not own the system. As long as they don't own the system, these kind of accidents will definitely happen. Instead of that, if you employ persons in the railways itself, they will own the system. The accidents will reduce much.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें। आइटम नंबर 19 तेल क्षेत्र विनिमय तथा विकास संशोधन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Madam, with your permission, I rise to move that the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024, further to amend the Oil Fields Regulation and Development Act 1948 as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration. Only if she gives me that. जी जी बोलिए। Madam, in the year 2014, when the Honorable Prime Minister assumed responsibility, between then and now, we have moved from being the 11th or 10th largest economy in the world to being the 5th largest, and we are very shortly going to be the 4th largest, and if the assessment of the International Monetary Fund is to be believed, we will be the 3rd largest economy by 2027. Economic growth and the size of GDP, as my friends on all sides of the House will agree, is heavily dependent on the utilization of energy. In fact, when you look at any energy, madam, any economy, and you look at the energy consumption, a reasonably good indicator of economic performance comes from the utilization of energy. Today, we are currently consuming 5.5 million barrels of crude oil in a day. When I had the privilege of being associated with this ministry, madam, 3.5 years ago, we were consuming 5 million. If we continue to grow at 6.5–7% rate of growth, it is only a matter of time that we will be consuming 6.5 and 7 million barrels of crude oil in a day. Madam, our journey to become a Viksit Bharat by 2047 or to become a $30 to $40 trillion economy by 2040 or thereabouts will require large amounts of energy in all forms. Today, we are in the happy situation of saying that out of the 3.5 million square kilometers of sedimentary basin that we have, 1 million square kilometers of that sedimentary basin was a no-go area. In other words, no prospecting could be done there. And as a result, our import dependence, both in terms of crude oil and natural gas, was on the rise. Today, I'm very happy to share with this House that 76% of all the prospecting and exploration that is being done in our sedimentary basin is being done in areas which have been freed up after 2014. Wow. In fact, between the years 2006 and 16, which we often in our trade call the dull decade, very little work was done. And madam, oil and gas is a sector which is heavily capital intensive, which has long gestation periods, and any decision that you take today or the government of the day takes today will begin to show results only 3, 5 or even 7 years later. I'm very happy to report that it is a result of various measures that we have undertaken, and I shall list a few of them. In 2016, we moved from production sharing arrangements to revenue sharing arrangements. And when
we were in 2014, out of the 3.5 million square kilometers of sedimentary basin, the amount being used was only, exploited was only 6%. We have to take that to 15%. In spite of our efforts, we have been only be able to raise it from 6 to 10%, but that's a major jump. Therefore, in the coming time, we will have to do more, and that is the starting point of my presentation on why this piece of legislation passed by the Rajya Sabha is coming before this August House today, Madam. Madam, India's hydrocarbon resource potential is immense. We have something like 42 billion tons of oil and oil equivalent of gas, which remains to be tapped. This is, by any yardstick, a very resource-rich Bharat. But prospecting and looking for oil and gas is an expensive business. Any well which is dug onshore costs something like $3 to $4 million per well, which under today's exchange rate comes to 33 to 35 crore rupees. And if the drilling is offshore, the cost is even higher. It comes to $100 million. Now, all the resources that we have at our disposal, the private sector, the state oil marketing companies and the government, we don't have the resources. And typically in the exploration and production sector, Madam, let me give you the case of Guyana. They dug 16 wells and they did not find oil and gas. It is not that 17th well that they found or they struck gold, as it were. I am very confident that with the efforts that we are making now and with the ecosystem which will come into being as a result of the legislation which is before this August House today, we will find many Guyanas in the Andaman Sea. And as we move forward, our requirements, not only for our domestic consumption, we are both producers, we are consumers, we are importers, we are also exporters. India is today occupying a very important place in the global energy market on all fronts. Madam, we moved in 2016 from a production sharing to a revenue sharing agreement. In 2018, the government reformed policies to promote coal bed, methane and enhanced oil and gas recovery methods. We also allowed CBM operations by coal miners. In 2022, we opened up 99% of the no-go areas, as I mentioned, out of the 3.5 million square kilometers, 1 million square kilometers, which was a no-go area, has been opened up. And Madam, I'm very happy to inform this House through you that when we had the 9th round of open acreage licensing policy, 38% of the bids which were received were part of this 1 million square kilometers of no-go area. Madam, the E&P, exploration and production industry, is blind without seismic data. To reduce the fear of investment becoming a sunk cost on account of no prospective discovery, we gave impetus to the acquisition of quality geological and geoscientific data by launching various programs such as National Seismic Program, Airborne Gravity and Geomagnetic Survey, Exclusive Economic Zone Survey, setting up of National Data Repository and hydrocarbon resources. I'm very happy to inform you that government has approved the acquisition of additional 2D seismic data of 20,000 LKM on land and 30,000 LKM in offshore. There are various other activities which we have undertaken to make the Indian market, Indian exploration space more attractive. And I'm confident that companies like Exxon, BP, Chevron, Total, ENI, which had left India, they are not only showing interest in coming back, many of them have already started partnering our OMCs, as in the rejuvenation of Bombay High, seismic survey by a Brazilian company, Petrobras, with Oil India in the Andaman Sea, and so on and so forth. We have already increased the explored area, as I mentioned, from 6% to 10% of the sedimentary basin, but we are very confident that with the steps in hand, we will take it to 15% of the sedimentary basin. In addition, Bombay High Basin, through exploratory efforts, has more than doubled between 2014-24 as compared to 2004 and 14.
We are also re-engaging with international oil and gas giants to fully help us and jointly explore our E&P. We have successfully awarded 144 blocks to competitive bidding process covering 2.5 lakh square kilometers and secured commitment investment of $3.37 billion under OALP from round 1 to 8. Of these, 131 blocks are under active exploration and some discoveries have been made. Madam, I will fast forward. Why are we bringing this bill? For a number of reasons. We used to have, Madam, an original law which was enacted in 1948. It was a common law to cover both mining, quarrying and petroleum leases or mineral oil. Then in 1957, a separate law for the mines and mineral sector was enacted, namely the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. While the parent legislation was rechristened the Oil Fields Regulation and Development Act 1948, all the terminologies within the Act continue to remain the same, and we are seeking to change that today. We are also introducing a single permit system for all types of mineral oil exploration, be it exploration, development, or production of conventional oil and gas, or unconventional hydrocarbons like shale gas, tight oil, or tight gas. The bill also seeks to clarify the meaning of the term mineral oils, particularly in its modern context, so as to promote exploration and production of new fuel options like shale gas, shale oil, coal-based methane, natural gas, gas hydrates. The bill also seeks to facilitate development of comprehensive energy projects and new technologies such as carbon capture utilization and sequestration, CCUS, green hydrogen, etc., all of which will help us achieve net zero status by 2070. The bill proposes a new framework for sharing of resources and infrastructure between different operators to improve viability of oil blocks. Madam, the oil bill also aims to resolve one of the biggest grievances of global oil companies interested in investing in India by providing stability in operations, both in terms of tenure of the lease and condition. It is my firm belief, based on my experience for the last 3.5 years, Madam, that stability and predictability for a foreign investor where large amounts of investment are required in the infrastructure sector are absolutely crucial, and this bill seeks to do that. We also propose to substitute an acrimonious mode of dispute resolution with fast and efficient alternate dispute resolution mechanism, which will ensure disputes can be resolved in a timely, fair and cost-effective manner. There were also some punitive provisions, such as a fine of 1,000 rupees, which made the provisions almost meaningless. We are substituting that by 25 lakhs rupees up to 10 lakhs per day for continuing infraction. The bill will, in summary, Madam, add to ease of doing business and make India an attractive destination. I want to conclude, Madam, by also a brief outlining, because I know many of my dear friends and members in the opposition will take the floor, to say what the bill does not do and will not do. The bill does not alter the rights of states. For on-land areas, the states will continue to give petroleum leases and receive royalties as before. That is the situation now. That is the situation which will continue. The bill does not alter the existing level playing field and offers no preference to either private or public sector. In fact, I heard some comments originally, but when I spoke in the Rajya Sabha and the bill was passed there, I think that point has not been repeated because it is amply clear within the text of the legislation and otherwise. Removal of criminal punishment would encourage infraction. This is a civil and commercial legislation. Criminal matters will continue to be tried under the relevant criminal laws. And to deter infractions, we have increased the penalties and provided for their expeditious adjudication. The bill grants no exemptions from the need for compliance with environmental standards. Additionally, our contracts mandate it and also provide for site restoration. The bill also provides for decarbonization and development of comprehensive energy projects. Madam, insofar as the fate of existing
contracts is concerned, existing leases and licenses will continue to be valid for their respective tenures, subject to terms and conditions governing the grant of such leases and licenses as provided in the savings clause of the bill. I hope this will reassure my colleagues from different parts of the House. There is no change in the rights of the states, which they will continue to enjoy these rights, and there is no attempt or even thinking of curtailing those rights. Madam, with these words, I will conclude my presentation. I look forward to the participation of my colleagues in the House, and it would be a privilege and honor for me to respond to those observations. I thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Madam Chairperson. I rise to speak on the Oil Fields Regulation and Development Amendment Act 2024. Before I commence my submissions, on a lighter note, I would like to say that it was good to hear the reply to the bill even before the discussion had commenced. So therefore, this seems to be a new precedent in the House that even before a discussion on the bill commences, you have the minister preempting and trying to offer justifications which he could have very much offered at the end of this discussion. Now, the statement of objects and reasons of this bill, and with your permission, Madam Chairperson, I would like to read out a line or two. It says in para 2 that the said act, which provides for a very different global energy context. So therefore, the rationale for amending this bill, according to the statement of objects and reasons, is that the global context has changed. I do not think anybody can have a quibble with it, because the global context changes on an everyday basis, especially when you have mercurial people in office in some parts of the world. But however, I would like to point out that India's quest for energy security and India's path towards facing and confronting these challenges has been a continuum now going back almost 5 decades. India weathered the first oil shock in 1973, when overnight, from $3 a barrel, the price of oil, crude oil, rose to $12 a barrel. India weathered the second oil shock when the Iranian Revolution took place, when there was again a spike in the price of oil. India weathered a third oil shock in 1991, when the first Gulf War commenced. And so therefore, I would very humbly like to point out to my colleagues on the Treasury benches that history did not start in 2014. History started much earlier. Yes. I think there is a need to be cognizant if you want to rise above partisan politics and really make this into a discussion about India's energy security rather than a he said, she said point scoring, which unfortunately is what commenced this debate. What is the global context today, Madam Chairperson? The global context today is that you have an ongoing conflict between Russia and Ukraine. You have a conflict between Israel, Hamas, Houthis, Hezbollah, by extension, certain other sovereign Westphalian states. And then you have the continuing rise of China since 2013, which has not been a too peaceful rise, and it has implications both for India's national security and, by extension, energy security, which is a subset of that larger, overarching construct of national security.
So therefore, our vulnerabilities remain. The three choke points, which actually are the Achilles heel of the global energy trade, the Straits of Bab al-Mandab, the Straits of Hormuz, the Straits of Malacca, they still continue to be the existential dilemma for all energy importing and energy producing and energy consuming countries. And unfortunately, and this is not to apportion blame on anybody, but globally also and through collective efforts, we've not really been able to find a solution, a reasonable, sustainable solution to these existential security dilemmas which have an impact on the largest energy consuming nations in Asia, be it India, be it China, be it South Korea, be it Japan. That continues to be a continuous Achilles heel. Of course, we've had some windfalls over the last couple of years. The Russia-Ukraine war, in a certain sense of the word, was a crude oil windfall for India. And not only for India, for China, for Turkey, for various countries, even in the European Union, which while supporting the sanctions against Russia, actually round-tripped their energy needs. And therefore, it's very interesting that India's oil imports from Russia in 2021 were 4.54 million tons. In 23, it increased to 88.92 million tons. We bought crude oil worth $49 billion from Russia. And I'm not saying that there's anything wrong with it. Every country acts in its own best national interest. And therefore, if we were getting access to cheaper crude oil and we availed of that opportunity, I am not going to have a quibble with the government on that. All that I'm going to point out is that these windfalls do not happen every day. And we need to be prepared. We need to be prepared. We need to be future ready, which unfortunately we are not. And I'll point out as to what the factual situation is, despite the claims which the Honorable Minister has made. In the year 2014-15, our production of crude and natural gas was 37.461 million metric tons. Our import in 2014-15 was 189.432 million metric tons of crude oil. The average price of crude was about $84.20 per barrel. In 2023-24, our crude oil production has actually declined to 29.4 million metric tons. Our crude oil import has actually risen to 243.3 billion metric tons. The average price of the Indian basket of crude oil as on the 10th of March 2025 stands at $70.65 to a barrel, which is almost about $10 less than what it was. Madam, you'll have to give me some time because this is an important subject connected with India's energy security. There are not many people in this house. So therefore, under those circumstances, allow me to complete. I'll need about 7 to 10 minutes more. I request your indulgence. And the average price was about almost $9 or $10 less than what it was in 2014. The unfortunate situation today is that in the year 2023-24, we imported 87.8% of our crude and oil gas and natural gas needs.
the figure could be almost as high as 90% today. It raises a very legitimate question as to what really has this government been doing over the past 10 years in attempting to bring down this import dependency on oil and natural gas. Let me come to Mumbai High. The Mumbai High crude oil and natural gas oil field at its peak was producing 476,000 barrels per day. What is its production now? 134,000 barrels per day. Notwithstanding the collaboration with Chevron, with ExxonMobil, and the large oil majors which Mr. Hardeep Puri referred to in his introduction to the bill, the fact is that the Bombay High collaboration has not boosted the oil production. Minister, when you get your chance, you'll get a chance to reply. We never interrupted you, heard you very peacefully. So therefore, when you get a chance to reply, we'll be here to hear you. Similarly, shale oil and gas. Now, according to estimates, there's 96 trillion cubic feet of gas and 1 billion barrels of shale oil in Cambay, Krishna Godavari and the Kaveri Basin. What has the government done in the past 10 years to tap the potential of shale oil? Why is there no explanation for what has been done over the past 10 years? This bill is not coming as if this government was sworn in yesterday. This government has been in office for 11 years now. So I would like to ask, what has this government done with regard to trying to explore shale oil and gas, which incidentally has made America almost self-sufficient insofar as their oil and gas needs are concerned? The Honorable Minister, Mr. Prahlad Joshi, to whom I had the honor of asking a question in the morning, which he chose to duck, but well, that's his prerogative, had said that 100 million tons of coal gasification and liquefaction would be achieved by 2030 by investing 4 lakh crores. I would like to ask, where are we in 2025? You have a target for 2030. Where are we with regard to coal gasification and liquefaction? How much of this target really has been achieved? So what you require, in addition to a law, is actually a roadmap to make India energy sufficient, which unfortunately is completely missing. I would like to end by just 2 or 3 suggestions, Madam Chairperson. There's a need to think out of the box. The Minister was absolutely correct. Oil exploration and gas exploration costs a lot of money. And that money, unfortunately, is not readily available in the amounts and volumes that it is required. I'm not suggesting that you go back to the wildcatting days of the Wild West. But what is the government planning to do to encourage independent oil explorers? After all, there's a whole community around the world of independent oil explorers. Does your bill have anything that incentivizes these independent oil explorers, in addition to, of course, the oil majors whom you are wanting that they come in, and if they do, that would be more than welcome. Similarly, there was an international energy forum in Riyadh. The minister is aware of it, given his long years in India's diplomatic service. Now, that forum was essentially created to facilitate a consumer-producer dialogue. How much of a role is India proactively playing in this forum in order to ensure that there is a dialogue between consumers and producers, especially given the fact that we import 90% or 87.8% as of 2023-24 of our oil needs. So therefore, the reality is the Indian economy even today is hydrocarbon dependent. And out of that hydrocarbon dependency,
65 or 55% of it is still coal. It is not even oil and gas. So therefore, I would like to request the government, you need to come out with a proper strategy which takes into account hydrocarbons, intermediates and renewables in a holistic manner. So therefore, you have a roadmap to energy self-sufficiency by 2050 or by 2060. Insofar as your bill is concerned, Mr. Minister, it makes minor changes here and there. So it's more of a technical bill. What is really missing is a vision. What is really missing is a roadmap. And as I started by saying, you are not a government which was sworn in yesterday. You are a government which is 11 years old. And you need to account for the fact that what have you done over the past 11 years. Thank you. माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। धन्यवाद सभापति महोदया। I stand for supporting the Oilfield Regulation Development Amendment Bill 2024, which was tabled by Honorable Minister Shri Hardeep Singh Puri ji under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Madam Chairperson, I belong to a oil and natural gas producing state of our beloved motherland. You all know the first refinery, or you can say the Asia's first refinery and one of the oldest refinery, established in 1901 in Deepgoi. And thereafter, in 1974, we have started another refinery. It is in Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited. And thereafter, in 1993, we have started the third one, that is Numaligarh Refinery Limited. So, I belongs to that rich oil and natural gas producing state, not as said by some member of the House day before yesterday, that you are from state of Lahe. We are not representing the state of Lahe. We are representing the strong and vibrant economy of India, which is a major contributory state in the oil and natural gas sector. Madam Chairperson, as I heard our learned Parliament member, who represent the Congress Party, Monetization, he said that it's not the year of 2014. Yes, all the people of India, all the members of Parliament and the world knows that it is not the history of 2014. If you goes back, it's the history of 1901 in India, when Congress also not here in India, BJP also not here in India. The journey started from 1901, but not this Congress, not this Congress. This Congress is a dynasty Congress. This is not the Gandhi's Congress. Mind it, and you also go that what I want to talk about the history of oil and natural gas. Madam Chairperson, why this bill has been coming for consideration and passing? First of all, the Oilfield Regulation and Development Amendment Bill 2014 will surely enhance
the investor confidence in India's oil and gas sector. The bill aims to boost investment in India's oil and gas sector by providing stable lease terms, enabling arbitration and streamlining operations, thereby addressing long-standing industrial demands for policy stability and regulatory clarity. Madam Chairperson, the bill also creates a more investor-friendly environment by addressing long-standing concerns about the policy stability. I want to quote that what was happened in 2014, before 2014. Before 2014, Bharat's crude oil import dependence was $1,42,962 billion. Our opposition friends should heard this. What was the dependence? What was the amount in 2013-14 due to the policy paralysis of the UPA government? It was $1,42,962 billion. But in 2020, 21, 22, under the dynamic leadership of Narendra Modi ji, what was the dependence? Bharat's crude oil import dependence decreased to $62,248 billion from $1,42,962 billion. That is the success story of our government led by Narendra Modi ji. Madam Chairperson, if you go through the success story, I want to inform the House what is the position of our country in world oil and fuel sector and natural gas sector. Madam Chairperson, you know and we all know that India is Asia's second largest refinery capacity country, amounting to 256 MMTPA with the 22 oil refineries. Madam, India is the third largest oil consumer, amounting to 233 MMT consumption in financial year 2024, Madam. Madam Chairperson, India is the fourth largest LNG importer, 31 MMTPA LNG imports in 2023-24. So, under the leadership of Narendra Modi ji, oil and natural gas sector and fuel became one of the India's most contributory in our country's GDP. Presently, we have 263 projects which was under implementation. The total cost of the project is 5,35,779 crores in this year. What are the sectors? The sectors are refinery, pipeline, exploration and production, petrochemicals, city gas distribution, infrastructure and others issues, and marketing also. Madam, I want to mention and feel proud, feel good that under the leadership of Narendra Modi ji, Paradip Numaligarh crude oil pipeline, PNCPL, and crude oil import terminal, COIT, has been
almost complete. On September 25, the project will be commissioned. The project cost is 11,407 crores. That is the longest pipeline. मैडम थोड़ा बोलना है प्लीज. गौरव दा भी सुन रहा है, गौरव दा भी असम से है, थोड़ा सा सबको सुनाना है क्या हो रहा है देश में. ऑपोजिशन के लिए ऑपोजिशन नहीं करना है. देश के विकास में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सेक्टर का एक बहुत बड़ा भूमिका है. इस भूमिका को सब लोग को जानना चाहिए मैडम. और एक बहुत बड़ा हम असम को प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट दिया. ये दूसरा है असम बायो रिफाइनरी. इट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ रिफाइनरी. पहला ऐसा रिफाइनरी है इस देश में जो वायु रिफाइनरी है. असम बायो रिफाइनरी किससे बनेगा? बैम्बू से. बैम्बू से इथानॉल प्रोडक्शन करेगा. और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है मैडम? 4,200 करोड़ का है. ये माननीय मोदी जी ने आसाम को उपहार दिया है. अभी बिहू आने वाला है. ये बिहू के पहले ये उपहार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आसाम वासियों को दिया है. ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन ये जून 2025 में इसका कंप्लीशन होगा. तुरंत बिहू के बाद होगा, लेकिन कपड़ा जब खरीदते हैं हम बिहू के पहले खरीदते हैं, बिहू में पहनते हैं, लेकिन उपहार पहले आ जाएगा. हमारे पास आ गया. इसका फिजिकल प्रोग्रेस 99% हो गया है. 1% खाली काम बाकी है, टेक्निकल काम, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण असम को पहले असम बायो रिफाइनरी मिलने वाला है और कमीशन भी होने वाला है. मैडम चेयरपर्सन, आप ऐसे कुछ विषय है जो विषय इस सदन के सामने लाना उचित समझता हो. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के नेतृत्व में इस भारत के इंडिया's aggressive economic growth is fueling its energy demand, which is predicted to nearby double to 1,123 million tons of oil equivalent. India has significantly increased the production of crude oil since independence. India also produces about 37 BCM of natural gas. If you go through the data and achievement, Moniji should hear me, Congress should hear me, what was in 2014. India energy availability was through biofuel, and ethanol procurement has increased. It was only 38 crore litre in 2014, madam. But what the volume in 2024, madam? It is increased from 38 crore litre in 2014 to 720 crore litres in 2024, madam. So where was UPA and where is now our NDA? That is the difference. The picture says something. मनीष तिवारी जी बाहर चला गया है. इनका स्वभाव है, अपना बोलता है, बाद में चला जाता है. ये स्वभाव को इसको कब ठीक होगा मालूम नहीं. डेप्यूटी लीडर इनको ठीक करना चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस थोड़ा उनको भी ठीक करना चाहिए. अपोजिशन का सुनने का धैर्य नहीं है, क्या है, अच्छा सुनता नहीं है, गाली याद रहता है, अच्छा काम याद नहीं रहता है. चलिए, जैसा करनी ऐसा भरनी है, ऐसा भरनी भी हो रहा है, जैसा कर रहा है किया है. मैंने इसका बारे में और एक तथ्य देना चाहता हूं मैडम. Under the UPA in the past,
the exploration activities were not supported through proactive government action. No acreage was licensed, Madam Chairperson. No acreage was licensed during 2004 to 2014, Madam. Thus, decelerating the exploration process. What he was questioned to the government, that exploration process and increasing input dependence in respect of crude and oil, natural gas was increased. In their period, Madam, not in our period. Definitely, we are an importing country in terms of in terms of crude oil, in terms of natural gas. We are importing. But हम बढ़ा रहे हैं मैडम इस देश के लिए, इस देश में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जीरो कार्बन, ये अपना जो ये पॉलिसी है, नेट जीरो कार्बन करने का हमारा जो नीति है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं मैडम। ये नरेंद्र मोदी जी का ही कमाल है, नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है। 2015 onwards, our government led by Modi ji has brought several policy norms like permitting unconventional hydrocarbon operations and levy of reduced royalties to promote exploration and production of hydrocarbons in our country. First hydrocarbon policy was started under the Narendra Modi ji, and it is in action. Madam Chairperson, if you go through the achievement, we can see that production of gas under the non-nominational fields have shown increase during the last few years, and share has increased to almost 30% of gross production. So despite the coupling with international market, as he mentioned, Manish ji, पूरे विश्व में एक coupling हुआ international markets में. The gas prices have remained, but under the dynamic policy and the stand of Narendra Modi ji, the gas prices have remained almost stable during the last few years. Domestically, petrol and diesel prices have come down about 15% and 10%, madam. But, sorry to say, the BJP-led, NDA-led government of state government reduced the prices of the petrol and diesel, but in some Congress-ruled state, they have not reduced. It is the same to the government, that opposition, state government. They always say for गरीब के बात करता है, तो गरीब के लिए उन्होंने पेट्रोल डीजल में अपना लेवी, अपना कस्टम्स ड्यूटी कम नहीं किया है तो भारत में हमारे एनडीए सरकार ने किया है। मैडम, आई एम कंक्लूडिंग मैडम। Madam, during the same period, India has been one of the very few major economies in the world where the prices of petrol and diesel have come down. काफी सारे देश में भारत ऐसा एक प्रदेश है जिसमें डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो गया है. Prices in the neighboring countries have also increased by more than 10 to 13%, madam. But 45 जवाब कराना स्पीड हमारे इसमें इसके 10 to 13%. प्लीज धन्यवाद. ऑनलाइन एक लाइन मैडम, एक लाइन बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए मैडम, कंप्लीट करने दीजिए, करिए कंप्लीट करना. हमारे दिन में 10 to 13% का पेट्रोल डीजल पैसे कमी आए. तो मैं ऑल टुगेदर सभी विषय को लेकर के मैं इस जो महत्वपूर्ण विधेयक माननीय मंत्री जी ने लाया है, अपना हरदीप सिंह पुरी जी ने, मैं इस विधेयक को पूरा सपोर्ट करता हूं और इस देश के आर्थिक विकास में इस बिल बहुत
एक माइलस्टोन के नाते काम करेगी, ऐसा उम्मीद रखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। माननीय सदस्य धन्यवाद देता हूँ। मेरा विषय खत्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आभारी हूँ सभापति महोदया, और सबसे पहले माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ मात्र अपनी विषय को 3 मिनट के अंदर समाप्त करने का प्रयास करें। 13 मिनट बोले महोदया। सबसे पहले तो आज होलिका दहन है और कल होली है। होली और होलिका दहन की बहुत बहुत पूरे सदन के साथियों को, आपको और कर्मचारियों को बधाई देता हूं। हालांकि हम सांसदों की तो होली खराब हो गई। बड़ा आशा था कि इस बजट में महोदया 2011 में जीएसटी लागू नहीं थी, यूपीए सरकार ने सांसद निधि 5 करोड़ किया, लेकिन 25 बरस हो गया, अब जीएसटी भी आने लगी, लेकिन सांसद निधि इस होली में नहीं बढ़ा। महोदया, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आसाम को रिफाइनरी मिली। महोदया, एक उद्धरण करना चाहता हूं। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन को ओएनजीसी ने जो ब्लॉक दिया था, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सीएजी रिपोर्ट, जीएसपीजी रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात गवर्नमेंट केजी मिशन में 63 ब्लॉक लिया और 19,000 करोड़ रुपए डाले। कहा गया कि यहां दूध, दही, दूध और पानी की तरह से पेट्रोलियम पदार्थ निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जीएसपीसी की बात कर रहा हूं। 19,000 करोड़ रुपया गलत तरीके से खर्च हुआ और जो अन्वेषण तेल का हुआ उसमें इतना नुकसान हो गया, मिला कुछ नहीं। महोदया, ये अच्छी बात है कि अगर खनन पट्टा से परेशानी हो रही है तो पेट्रोलियम पट्टा का नाम रखा जाए, ये अच्छी बात है। उसकी व्यापकता बढ़ाई जाए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो संशोधन है केवल कारपोरेट जगत के लाभ के लिए न हो, यह मेरी शंका है। महोदया, जो इस विधेयक से तो लगता है कि सरकार ने एक बार फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने कारपोरेट मित्रों को देश की प्राकृतिक संपदा तेल गैस सौंपने का इंतजाम कर लिया है। 2023-24 में ओएनजीसी ने करीब 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो दिक्कत क्या है? अपना मुनाफा कमाए। आप परिवर्तन कर रहे हैं 25 लाख रुपया जुर्माना का, आपराधिक सजा हटा दी जाए और 25 लाख जुर्माना हो जाए। मैं सरकार से और मंत्री से कहना चाहता हूं कि जुर्माना होते हैं और मुकदमे होते रहते हैं, जुर्माना का कभी रिटर्न नहीं लिया जा पाता है, यह भी ध्यान रखिए। कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, तेल के दाम कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे देश के साथ हमको कंपटीशन करना होगा विश्व के साथ कि विश्व में जितने भी तेल कंपनियां हैं हम उन पर न निर्भर होकर के अपने पास आए, अपने निर्भर रहें। लेकिन ये भी तो बताएं कि जो हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, जो सोशल मूवमेंट के काम हैं, इन कंपनियों का क्या योगदान है? महोदया, आज भी हमारे देश की बहुत सी ऐसी आबादी है जो गैस सिलेंडर नहीं ले सकती, वो सड़क के किनारे रहती है, वो झुग्गी झोपड़ियों में जीवन बिताती है। मिट्टी का तेल बंद हो गया। हाँ, बंद हुआ। मिट्टी का तेल कहीं पता नहीं जाए, स्टोव से खाना बनाता था गरीब आदमी। आज भी जो आदिवासी इलाके हैं वहां जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो वहां मिट्टी के तेल का उपयोग था, लेकिन उसका नाश हो गया। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो हमारे पेट्रोल कंपनियां हैं, माननीय मंत्री जी,
ये CSR फंड जो सोशल जस्टिस के लिए जाता है उसमें ये भेद कर रही हैं और सभी सांसदों को, सभी दल के सांसदों के इलाके में काम नहीं कर रही हैं। हम चिट्ठी लिखते रह गए लेकिन किसी कंपनी में नहीं रह रहे। भेदभाव मंत्री जी न करिए, हम सभी सांसद हैं और आप, मैं यही कहूंगा, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद। On behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024. Madam, our economic growth depends on trade as well as import-export policies. And our country, the trend of our country is we are importing heavily. And still our country is heavily dependent on foreign countries for importing crude oil. So our Honorable Minister Hardeep Singh Puri ji is trying his level best to make our country self-sufficient. But I would like to know from the Honorable Minister, what is the plan of this ministry to make our country self-sufficient in the field of oil sector? And Madam, so our country is undergoing a severe crisis due to skyrocketing fuel price. I would also like to know from the Honorable Minister, sir, how to give relief to the poor people as they are heavily burdened on the fuel price. And Madam, now coming to the bill, so the most worrying part of the bill is, sir, that it opens the door for private companies to dominate oil fields, allowing big corporations to extract mineral oils with very little government control. The newly added scheme 4A says that no one can carry out operations without a valid lease, but it does not give the state enough power to strictly control or monitor exploration activities. This means the control of natural resources will shift from the government to private companies, reducing the state direct authority over oil production. This goes against the principle of national sovereignty and could lead to corporate exploitation of resources. So another major concern is the amendment to Section 6, which now promotes not only extraction but also long-term exploration of oil fields. Even worse, the central government has been given the power to extend the lease period indefinitely, allowing oil companies to exploit this field for decades without any strict environmental checks. This is a direct violation of India's commitment to fight climate change under the Paris Agreement and other global environmental treaties. If the government continues to allow unchecked exploration, it will have severe long-term impacts on the environment and public resources. Madam, now coming to Section 5 gives the central government full authority to grant, extend or renew petroleum leases without seeking approval from state government. Additionally, the newly, what happened, madam? 10 minutes. So I am very much confined with the bill. Kindly allow me. Why 10 minutes? कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, एक मिनट में पूरा कर लीजिए. Without seeking approval from the state government. Additionally, the newly introduced Section 4A prevents state government from issuing exploration license, handing over complete control of oil exploration to the central government. And this move is unconstitutional and directly violates the federal structure of our country. And the bill also introduced a provision for utilization of leases across states, meaning if an oil or gas reservoir extends across 2 or more states, the central government can club them under a single lease agreement. This will allow big corporate companies to extract resources from multiple states under one license, increasing their profits while reducing the revenue that individual states would otherwise receive. Additionally, the bill does not include any clear rules for environmental protection, labor rights or local development, proving that the biggest beneficiary of this bill is not the public but large companies. And another major flaw
in section 6A, which places the responsibility of decommissioning and restoring the site entirely on private companies. However, the bill does not ensure any strict state supervision, which means companies could easily abandon damaged sites without proper restoration, causing serious environmental damage like soil erosion, groundwater pollution, deforestation. What still the bill encourages the use of carbon capture, utilization and storage, which will allow prolonged fossil fuel exploration, going completely against India's climate change. And Madam, complete the bill kariye. also makes no mention of protecting the rights of indigenous, tribal or local communities who live in oil-rich regions like Assam, Gujarat, Jharkhand has already shown the large scale of oil exploration has resulted in forced displacement, land grabbing and destruction of biodiversity. Section 9 are highly unfair towards small and medium scale oil operators. The bill imposes a fixed penalty of ₹25 lakhs for violating Section 4A or Section 6A, along with an additional fine of 10 lakhs per day for continuing non-completion. माननीय सदस्य DM कातिर जी, allowing oil corporation to dominate the oil sector. Madam, just 1 minute. And the major concern is the amendment Section 5, which now allows the central government to make new rules, extend petroleum leases and renewal licenses. And the bill also completely contradicts India's climate goals. While India has committed to achieving net zero carbon emission by 2070, the bill promotes longer lease periods, automatic renewals without environmental reassessment, and carbon capture, utilization and storage, which only increase fossil fuel exploration. Madam, my constituency. बोलिए माननीय सदस्य प्लीज. Letter conclude. Let her conclude, sir. Letter conclude. 1 minute, madam. 1 minute, let her conclude. नहीं मैम नहीं. One line only, madam. One line, Magali. एक One line, madam, one line. Ashoknagar oil field was discovered in 2018 by Oil and Natural Gas Corporation. This is the first oil field in West Bengal and West India, and the pipeline from Jagdishpur, Holdia, Dhamra project. I would like to know from. Thank you. हो गया माननीय Chairman, सदस्य. madam. Today I stand before you to address the Oil Fields Regulation and Amendment Bill 2024. This bill is brought into the bill is a timely and a transformative measure to modernize our regulatory framework for oil and gas exploration. However, we embrace progress. We must remain mindful of the regional and ecological impacts and the resource extraction. Sir, it broadens the definition of mineral oils to include naturally occurring hydrocarbons such as coal bed methane, shale gas and shale oil. This expansion aligns with the global best practices and encourages innovation in previously untapped areas. Agreed. Bill replaces the outdated mining lease with more comprehensive petroleum lease, ensuring that our regulation reflect the evolving nature of the industry. Bill also empowers the central government to make rules on critical matters like the environmental protection, emission reduction and the conservation of mineral oils. Additionally, it decriminalizes certain provisions of the Act, replacing criminal penalties with the adjudication mechanism to foster a business-friendly environment. These changes represent a paradigm shift towards a sustainable and efficient resource management. However, alongside these merits, we must address the pressing issues of tungsten hydrocarbon mining in Tamil Nadu. The biodiversity-rich Melur region of Madurai, a proposed site of tungsten mining, is facing significant opposition from local communities and environmental activities. This region, home to rare flora and fauna, has been declared a biodiversity heritage site, and any mining activity here could result in irreparable ecological damage. Similarly, hydrocarbon mining projects proposed in Gulf of Mannar, a biodiversity hotspot, poses a severe risk to fragile ecosystem, marine life and livelihoods of our coastal communities. The lack of
prior consultation with the Tamil Nadu government before initiating these projects has raised valid concerns. Yes. In this context, I must condemn the commend the vital role played by our Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin in addressing these issues. His proactive leadership and unwavering commitment to protecting the state's natural heritage and the livelihoods of its people have been exemplary. Our CM Stalin sir has consistently voiced his opposition to these projects, emphasizing the ecological and socio-economic risk involved. He wrote to the Prime Minister urging the central government to halt these initiatives and reconsider their impact on Tamil Nadu's fragile ecosystems. His efforts have also included passing the unanimous resolution in the Tamil Nadu State Assembly and engaging with the local communities to address their concern. To ensure equitable and transparent decision making, I have some suggestions for the ministry. For a mandatory state consensus, a legal framework should be established, require explicit no objection certificate from the state government before initiating mining, exploration projects. This would guarantee the states that having a decisive role in approving projects that impact their regions. Madam, this is a very important suggestion. I want to give it to the ministry. Madam, I have to conclude, madam, please. For a transparent process, we must make all project details, including environmental, impact assessment and community feedback, accessible to the state authorities and public. Strengthen environmental safeguards by redefining project boundaries to exclude biodiversity-rich areas and implement strict environmental regulations to prevent ecological damage. Community engagement by actively involve local communities in the decision-making process to address their concerns and protect their livelihoods. Yes. For independent oversight, we should establish an independent regulatory body to oversee mining projects, ensuring compliance with the environmental and social norms with the state participation. Speaker, sir, and honorable members, this bill and the issues it encompasses reminds us that our path to the progress must be both inclusive and responsible. While we harness the potential of our natural resources to drive economic growth, we must also safeguard the environment and empower the communities that depend on it. Let us therefore strive to build a future where development and sustainability go hand in hand. I urge upon the Union Minister to consider the above said mentioned considerations and join me in advocating for an industrial development approach that is fair, transparent and forward thinking. Thank you. माननीय सदस्य टी कृष्णा प्रसाद जी. Thank you, madam, for giving me the opportunity to speak on the debate over Oil Fields Regulation and Amendment Bill 2024. Madam Speaker, I stand to support this bill and offer my opinions and suggestions on this crucial piece of legislation. As we move on the path of development, Madam, our energy needs are bound to grow. However, this increase will have to be met from our own enhanced production instead of imports. India's oil import dependency in April-September period of this year has touched 88.2%, up from 87.8% in 2023-24. This is a concerning figure and is alone enough to exemplify the need for this bill, which will help us to achieve Urja Atmanirbharta or energy self-reliance. I was listening to Honorable Petroleum Minister's address in Rajya Sabha, Speaker ma'am, and he highlighted how in the past decade the NDA government has endeavored to encourage exploration of petroleum and natural gas. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has established itself on the global stage with exports of the petroleum product rising from $60.84 billion in 2014 to 84.96 billions in 2023, showing the tremendous growth that the NDA government has managed to achieve over the past decade. According to International Energy Agency's World Energy Outlook 2022, Madam Speaker, India's
energy consumption will double by 2040. As per the IEA, India's energy demand is expected to grow at about 3% per annum till 2040, compared to the global growth rate of only 1%. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, has also highlighted in its World Oil Outlook 2022 that India will have the highest energy demand, rising from 18.6 million barrels per day to 37.7 million barrels per day. This increase in petroleum demand is fueled by the growing economic activity and increasing ease of doing business, contributing to the Honorable PM's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. India has been the largest exporter of petroleum products in Asia for the year 2020-21, which is a testament to the unwavering vision of the government for promoting business. India is also the fourth largest refiner, another feather in the cap we all should be proud of. The government has also allowed 100% FDI via the automatic route for private companies in refining as well as LNG regasification infrastructure, which will promote investment in the capital-intensive sector, leading to inclusive growth. Madam. Ma'am, I would like to draw the attention of the House to another pertinent and equally important indicator. India ranks 22nd in the world in terms of proven crude oil reserves. However, the reserve/production ratio is 16.1. This means that given the current level of production and no new reserves being accreted, the present reserves will also last approximately for 16 years. It is essentially indicates that all of the reserves will be depleted within our lifetimes if corrective action is not taken. Addition of reserves, however, is a dynamic process, and this is the chance for India to shine. To this end, Madam, the bill makes a landmark change by introducing a petroleum lease in the place of mining lease. The mining sector is governed by the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, and as such, there should be a transparent and seamless procedure in the petroleum and hydrocarbon exploration to encourage prospecting in operations thereafter. It is pertinent to point out that the petroleum exploration differs fundamentally from the mining activities in both their methods and impact. Due to the existing nomenclature, confusion often arises, delaying petroleum exploration operations for the need of irrelevant permits and licenses. With the new petroleum lease, prospecting, exploration and exploitation will be enhanced, increasing our reserve/production ratio and providing us all with a safe and secure future. Lastly, Madam, any business requires stability and coherent policy environment, one that encourages investment and also compensates in case of loss. This is particularly relevant in the case of petroleum sector, where the capital investment is intensive. The bill offers a lease on predictable and transparent terms, as well as provides for compensation in case of suspension, revocation or cancellation of the lease. This provision will create a relaxed regulatory environment and put India as among the global leaders in this sector. Madam, finally, as I conclude my speech, I would like to reiterate that Andhra Pradesh is the youngest state in the country, having undergone bifurcation 10 years ago. It is now imperative that Andhra's development is hastened, not only to recoup the losses of the past 5 years under the last state government, but also to establish the vision of Vikasit Bharat and Vikasit Andhra under the combined leadership of Shri Narendra Modi ji in the center and Shri Nana Chandrababu Naidu ji in the state. Thank you, Madam, once again for giving me this opportunity. Thank you. माननीय सदस्य कौशलेंद्र कुमार जी। आपने मुझे जेल क्षेत्र विधेयक तथा विकास संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता दल यू की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। आज विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर ही
निर्भर करता है। तेल उत्पादक देशों को मोनोपोली सी है कि कच्चे तेल के भाव को उतार चढ़ाव का खेल खेला जाता है, जिसमें भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। देश में महंगाई की सबसे बड़ी वजह तेल के बढ़ते रेट का कारण होता है। भारत करीब 80 से 85% अपने खपत का कच्चा तेल आयात करता है, यानी हम कच्चे तेल का आयात पर निर्भर हैं। अमेरिका के दबाव के कारण पिछले कुछ वर्षों से देश के कच्चे तेल का आयात पर असर दिखाई दिया है। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई और देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बिल लाने से काफी महत्वपूर्ण बिल है। देश के कच्चे तेल का भरपूर भंडार है, किंतु महंगी टेक्निक होने के कारण देश में उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सका है। अब मंत्री जी काफी अध्ययन करके और इस देश के विकास के लिए तेल का आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए ये सही निर्णय लिए हैं। इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस कानून के बनने से तेल क्षेत्र में दोहन के लिए विदेशी निवेश बढ़ेगा, तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, आयात कम होगा और हमारी विदेशी मुद्रा का भी बचत होगा। देश में अपना उत्पादन बढ़ाने से तेल और गैस सस्ते होंगे। देश तेल और गैस के लिए आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में आएगा। देश में विकास की रफ्तार तेज होगी। महोदय, मैडम, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देश में कच्चे तेल की खपत करीब 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो कि अगले 5 वर्ष में बढ़कर 7 मिलियन बीपीडी हो जाने का अनुमान है। डाटा के अनुसार देश में करीब 651.8 मिलियन टन कच्चा तेल का भंडारण और करीब 1138.6 बिलियन क्यूब मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार है। अतः ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दोहन और उत्पादन बढ़ाना ही होगा। महोदय, मैडम, कानून बनाने के बाद तेल क्षेत्र में दोहन और उत्पादन करने वाली देशी और विदेशी कंपनियों को निवेश और कारगर करना सरल होगा। तेल खनिज क्षेत्रों को पट्टे पर दिया जाएगा। राजस्व साझाकरण नियमन में सुधार कर प्रोत्साहित करने वाला बनाया गया है। पट्टे पर देने में राज्यों की राज्यों की भूमिका को बरकरार रखा गया है और तेल को राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा दिया जा रहा है। तेल क्षेत्र के विवाद के हल के लिए मध्यस्थता की भी व्यवस्था की गई है। सरकारी हस्तक्षेप समाप्त होगा। अब सुधार से निवेशकों की नीतिगत स्थिरता मिलेगी, कारोबार करने में आसानी होगा। आशा है नए कानून से देश में तेल क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, खोज और उत्पादन बढ़ेगा, देश में विकसित और रफ्तार तेज होगी। कीमतों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में गिरावट तथा स्थिरता आएगी। राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कच्चे तेल की आयात पर विदेशी मुद्रा कम खर्च होंगे। देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे। मैडम, 2 मिनट और दे दीजिए। माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बस 2 मिनट। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इथेनॉल मिश्रण की व्यवस्था लागू किए और इसका परिणाम हुआ कि आज मेरे बिहार में इथेनॉल के उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। देश में पहला इथेनॉल पॉलिसी बिहार राज्य में बना और मैं मानता हूं कि भारत सरकार की 20% तक इथेनॉल मिश्रण की व्यवस्था में बिहार में उत्पादित इथेनॉल का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया। मैडम, इसलिए मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं और बिहार में करीब 15 इथेनॉल फैक्ट्री में उत्पादन चल रहा है और करीब 56.50 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है और 47
नए इथेनॉल का प्लांट की मंजूरी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदया। धन्यवाद सभापति महोदया। मुझे ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। ये विधेयक देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेल और गैस क्षेत्र का महत्व किसी भी देश के विकास और अर्थव्यवस्था में अति प्रमुख है। आज भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी बन चुका है। 2014 में हमारी रिफाइनिंग क्षमता 215.07 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष थी, जो अब 256.8 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। तेल और गैस की बढ़ती मांग और सरकार की दूरदर्शिता, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। अनुमान यह है मांग दोहरा ने 1123 मिलियन टन तेल समतुल्य तक पहुंच जाएगी। ये देश के विकास की कहानी बना रख सकती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने कच्चे तेल के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। ये मात्र 0.26 मिलियन टन से बढ़कर 30 मिलियन टन हो गया है, जो 10,000% से भी अधिक की वृद्धि की दर्शाता है। इथेनॉल उत्पादन में क्रांतिकारी बदल, सरकार ने जैव ईंधन के माध्यम से ऊर्जा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। 2014 में जहां इथेनॉल की खरीद मात्र 38 करोड़ लीटर थी, वही 2024 में ये 720 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और 180 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात प्रतिस्थापित हुआ है। अध्यक्ष महोदया, भारत की हरित और प्रायोगिक क्रांति भविष्य की दिशा के लिए मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है। 8 लाख करोड़ का निवेश और 6 लाख नौकरियां का सृजन करता है। 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अनुमानित है। रुपए 1 लाख करोड़ की जीवाश्म ईंधन आयात में किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से हमारे यहाँ बन चुका है। सभापति महोदया, खनिज तेल की परिभाषा का विस्तार जो किया है, तेल में प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन, कोल बेड, मीथेन और सेल गैस को शामिल किया गया है। इसके कोयला, लिगाइट और हीलियम शामिल नहीं होंगे। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो भूमिका है उसके बारे में दो बात करना है। साल 2021-22 में रूस में भारत का कच्चा तेल आयात मात्र 1% था, जो 2023 में बढ़कर 20% हो गया। ये ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतिक और किफायती विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा ओपेक देशों में, जिससे सऊदी अरब और यूएई के साथ भी मोदी सरकार ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत किया है। सऊदी अरब जी भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, ने पिछले साल लगभग 38 मिलियन टन कच्चा माल भारत के निर्यात किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ईस्टर्न पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन जैसे पहल ने भारत को भू राजनीतिक तनावों और बावजूद ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में मदद की है। भारत ने 2022 में अपनी ऊर्जा जरूरतों को 85% आयात किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां के कारण वैश्विक बाजारों में कीमतों की बढ़ने के बावजूद भी घरेलू कीमतों की स्थिरता रखा गई। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली सभापति महोदय 2 पॉइंट लगता है। सरकार से मैं पेट्रोल और डीजल के बारे में, मिलावट के बारे में करना चाहता हूं कि मिलावट करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोषी पेट्रोल पंपों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाए। पेट्रोल पंप की नियमित और पारदर्शी जांच के लिए एक ठोस तंत्र विकसित किया जाए। दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और आपराधिक मुकदमे दर्ज किया जाए। जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है, सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, सिलेंडर की गुणवत्ता जांचने के लिए सख्त मानक लागू किया जाए। पुराने और खराब सिलेंडर को तुरंत बाजार से हटाया जाए। सिलेंडर से जुड़ी सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। सिलेंडर वितरण और रिफिलिंग केंद्रों पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। सिलेंडर फटने के मामलों में दोषी अधिकारियों और कंपनियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सभापति महोदया, मेरे मुंबई के बारे में एक चिंता मुझे कह रही है। एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये समस्या पाइप गैस कनेक्शन की उपलब्धता न होने के कारण पाइप गैस कनेक्शन के लिए 3 साल तक लोगों को रुकना पड़ता है। मुंबई में घनी आबादी है, शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पाइप गैस कनेक्शन के केवल
अधिक सुरक्षित है, बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की दिशा में मुंबई को जल्दी से जल्दी पाइप गैस नेटवर्क से जोड़ना बेहद जरूरी है। ये कदम न केवल गैस वितरण में सुधार करेगा, बल्कि हमारे शहर को स्वच्छ करेगा। मेरा 1 मिनट में अनुरोध है, 3 साल से अधिक समय से पाइप गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे आवेदनों को प्राथमिकता से आधार पर पूरा किया जाए। पाइप गैस का नेटवर्क के विस्तार के लिए ठोस योजना बनाई जाए, ताकि अधिक से अधिक घरों में ये सुविधा मिले। ऊंची इमारती और हाउसिंग सोसाइटी में सिलेंडर के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम घटने के लिए कदम उठाया जाए। सभापति महोदया, ये मुद्दा केवल सुविधा का नहीं है, ये मुंबई के नागरिकों की सुरक्षा। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to participate in the discussion to introduce the Oil Field Regulation Development Amendment Bill 2024. Expanding scope of mineral oils, the major highlight of the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 is the expansion of the definition of mineral oils. This includes the hydrocarbons such as shale gas, coal bed methane, alongside crude oil and the natural gas. The risk of over-exploitation of resources, the expanded definition of mineral oils could encourage rapid exploitation of unconventional resources like shale gas, leading to the resource depletion and ecological imbalances. The integration of renewable energy projects, the bill proposes the forward-looking measures to prevent the renewable energy projects like solar and wind power within the oil fields. This provision represents the commendable efforts to integrate sustainability into the energy sector. Centralization of regulatory power. The bill grants extensive authority to the central government for the rule making and the dispute education. Although the bill introduces the alternative dispute resolution ADR mechanisms, and the absence of clear timelines and procedural guidelines could lead to the prolonged disputes and deterring investment in the sector. The well-defined framework is essential to prevent the delays in the oil field operations and instill investor confidence. The oil